Hello and welcome to Chopstick Maths, Chapter Line and Plane, Exercise 6.2, Sum number 1. Question दिया गया है, find the length of the perpendicular from the point whose coordinates are 2, -3, 1 to the line x plus 1 upon 2 is equal to y minus 3 upon 3 is equal to z plus 1 upon minus 1. तो सबसे पहले यहाँ एक लाइन दिया है जिसका इक्वेशन दिया गया है और एक पॉइंट है जो लाइन के बाहर है और उस पॉइंट से हमें लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढना है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, 1. सॉल्यूशन, सबसे पहले ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड पॉइंट M is the foot of the perpendicular lies on the line. तो P से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन को और जहाँ ये परपेंडिकुलर लाइन को मिलता है उस पॉइंट को हम M कहेंगे. तो स्टेप्स टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ PM. तो ये आपको लिखना नहीं है आंसर में, लेकिन ये सिर्फ स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है. तो अगर ये स्टेप्स आप याद रखते हो तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना. तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा. तो ये जो पॉइंट M है लाइन के ऊपर, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा. तो ये लैम्बडा क्या है हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे. पॉइंट नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेगमेंट PM एंड कॉल इट A1, B1 एंड C1. तो इस सेगमेंट PM के हमें डायरेक्शन रेशियोज ढूंढने हैं, उसे A1, B1 और C1 कहेंगे. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर गिवन, कॉल इट A2, B2 एंड C2. तो लाइन के इक्वेशन से हम लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आसानी से ढूंढ सकते हैं और उसे हम A2, B2 एंड C2 कहेंगे. कैलकुलेट लैम्बडा यूजिंग द प्रॉपर्टी एज PM इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. Therefore, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. तो हमें पता है PM के डायरेक्शन रेशियो से A1 B1 और C1 और लाइन के डायरेक्शन रेशियो से A2 B2 एंड C2. और PM जो कि लाइन को परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी है कि if PM is perpendicular to the line, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लैम्बडा का वैल्यू आसानी से ढूंढ सकते हैं. फिफ्थ, यूजिंग लैम्बडा फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M है जो इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा है. तो लैम्बडा का वैल्यू मिलने के बाद हम आसानी से न्यूमेरिकल वैल्यू लैम्बडा का ढूंढ सकते हैं. तो एक बार हम पॉइंट M के न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेते हैं. तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, M के कोऑर्डिनेट्स भी हमने कैलकुलेट किए हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम आसानी से डिस्टेंस ऑफ PM कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स निकालने इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा. इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया गया है, x plus 1 upon 2 is y minus 3 upon 3 is equal to z plus 1 upon minus 1. और P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जो है 2, -3, 1. To determine the variable coordinates of point M in terms of lambda, now the equation of the line is x plus 1 upon 2 is y minus 3 upon 3 is z plus 1 upon minus 1. तो देखिए अब ये इक्वल रेशियोज है, तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं टू सम वैल्यू, लेट अस कॉल इट लैम्बडा. So equating each ratio, x plus 1 upon 2 is equal to lambda, therefore x plus 1 is equal to 2 lambda, so x is 2 lambda minus 1. Second, y minus 3 upon 3 is equal to lambda, so y minus 3 is equal to 3 lambda, so y is equal to 3 lambda plus 3. And third, z plus 1 upon minus 1 is lambda, so z plus 1 is equal to minus lambda, therefore z is equal to minus lambda minus 1. तो ये जो तीनों हैं ये अब M के कोऑर्डिनेट्स है. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M आर 2 lambda minus 1, 3 lambda plus 3, minus lambda
minus 1. And the coordinates of P are 2, minus 3, 1. तो अब हम सेगमेंट PM के डायरेक्शन रेशियोज ढूंढेंगे जो कि A1 is equal to 2 lambda minus 1 minus 2 which is 2 lambda minus 3. B1 is equal to 3 lambda plus 3 minus of minus 3 which is 3 lambda plus 3 which is 3 lambda plus 6. And third, C1 is equal to minus lambda minus 1 minus 1 which is equal to minus lambda minus 2. So, direction ratios of PM are A1 is 2 lambda minus 3, B1 is equal to 3 lambda plus 6 and C1 is equal to minus lambda minus 2. And direction ratios of the line are A2 is equal to 2, B2 is equal to 3 and C2 is equal to minus 1. How to find direction ratios of the line when the Cartesian equation of the line is given? Now, the given Cartesian equation of the line is x plus 1 upon 2 is y minus 3 upon 3 is equal to z plus 1 upon minus 1. Now, comparing this with the Cartesian equation of the line, which is x minus x1 upon a is y minus y1 upon b is z minus z1 upon c. Now here a, b and c are the direction ratios of the line. So on comparing this, we can see that a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to minus 1. So the three direction ratios of the line are a is equal to 2, b is equal to 3 and c is equal to minus 1. Point number 4 to calculate lambda. अब हमें पता है PM के डायरेक्शन रेशियो से A1, B1, C1 और लाइन के डायरेक्शन रेशियो से A2, B2 और C2 और PM जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर है. Therefore, if PM is perpendicular to the line, then A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 is equal to 0. तो अब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. A1 is 2 lambda minus 3 and A2 is 2. So 2 into 2 lambda minus 3 plus B2. B1 is 3 lambda plus 6 and B2 is 3. So it is plus 3 into 3 lambda plus 6 plus C1 is minus lambda minus 2 and C2 is minus 1. So it is plus into minus 1 into minus lambda minus 2 is equal to 0. Therefore, 2 into 2 lambda minus 3 plus 3 into 3 lambda plus 6 plus into minus 1 is minus 1 into minus lambda minus 2 is equal to 0. So now on multiplying, 2 into 2 lambda is 4 lambda minus 2 3s are 6 plus 3 into 3 lambda is 9 lambda and plus 3 into plus 6 is plus 18. Minus 1 into minus lambda is plus lambda and minus 1 into minus 2 is plus 2 is equal to 0. So 4 lambda plus 9 lambda plus lambda is equal to 14 lambda and minus 6 plus 18 plus 2 is plus 14. So 14 lambda plus 14 is equal to 0. Therefore 14 lambda is equal to minus 14. Therefore lambda is equal to minus 1. अब हमने लैम्ब्डा का वैल्यू कैलकुलेट किया है. अब हम इस लैम्ब्डा के वैल्यू को m के कोऑर्डिनेट्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वी विल गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स m. So substituting lambda in coordinates m, the coordinates of m are 2 lambda minus 1 comma 3 lambda plus 3 comma minus lambda minus 1. So x is 2 lambda minus 1, so x is equal to 2 into lambda is minus 1, so 2 into minus 1 minus 1. Therefore x is equal to minus 2 minus 1, that is x is equal to minus 3. Similarly, y is 3 lambda plus 3, so substituting lambda is minus 1, we get y is equal to 3 into minus 1 plus 3. Therefore y is equal to minus 3 plus 3, so y is equal to 0. And third, z is minus lambda minus 1, therefore z is equal to minus lambda is minus 1, so it is minus of minus 1 minus 1, which is therefore z is equal to 1 minus of minus 1 is 1 minus 1, so it is z is 1 minus 1, therefore z is equal to
0. So m के कोऑर्डिनेट्स है -3, 0, 0. Step number 6 to calculate length of PM. P के कोऑर्डिनेट्स है 2, -3, 1 और n के कोऑर्डिनेट्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं the coordinates of m are -3, 0, 0. So distance formula जो है length of PM will be under root x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. So length of PM will be under root -3 minus 2 the whole square plus 0 minus of -3 which is plus 3 the whole square plus 0 minus 1 the whole square. So length of PM will be under root -3 minus 2 which is -5 the whole square plus 0 plus 3 which is 3 the whole square plus 0 minus 1 which is -1 the whole square. So length of PM will be under root -5 square is plus 25 plus 3 square is 9 plus -1 square is 1. So length of PM will be under root 25 plus 9 plus 1 which is under root of 35. So length of PM is under root of 35. Thank you.